नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, विदेश व्यापार, पर्यावरण और ना जाने कितने मुद्दों के ऊपर आप इस चैनल के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम देखते आए हैं। यहां पर विदेशों में बसे हुए भारतीय, उनके साथ भी जो हमारी बातचीत होती है, उन्हें भी आप देखते आए हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ। खासतौर से डॉक्टर मुक्तदर खान, जो कि डेलावेयर यूनिवर्सिटी यूएस से हैं और यूएस प्रशासन समय समय पर उनसे सलाह भी लेता रहता है, वो अक्सर हमारे शो पर आते रहते हैं। आज इसी कड़ी में कि जो विद्वान विदेशों में हैं, और खासतौर से आज के विद्वान एक ऐसे विद्वान हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, पर्थ शहर से हैं और एक पॉलिटिशियन हैं, यानी कि राजनीतिज्ञ हैं तो भारतीय मूल के, ओरिजिनली कश्मीर से, लेकिन उन्हें कई दशक हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए और वहां की राजनीति में गहरी रुचि लेते हैं, चुनाव भी लड़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म का स्ट्रक्चर है, सारा एक अलग किस्म का डोमेन है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान जो कि ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान को कैसे देखा जाता है, क्या व्यू पॉइंट इमर्ज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हम स्वागत करेंगे बिल के कौल साहब का, जो कि ऑथर भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लिबरल पार्टी के। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर, बिल साहब। Thank you, Dadivat, Dineshji. Thank you so much for inviting me to the show. I really enjoy your show on a daily basis almost. देखिए, yes, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोलता हूँ कुछ। अभी this is a union of फेडरेशन है ये, एंड जो ये स्टेट्स हो गई थी 1900 में, तो ये पीसफुली, अनलाइक द यूएस, ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स जॉइंड पीसफुली टू मेक द फेडरेशन. So we have a federal system, and Australia follows the Westminster system of governance. We had the lower house, the House of Republicans, representatives, and we had the upper house, which is called the Senate. जैसे इंडिया में है लोक सभा, राज्य सभा, वैसे ही है, no difference. तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है तकरीबन 100 साल पहले बना था. 3 लोग एक मेलबर्न के होटल में for 3-4 days they stayed and they came out with the Constitution of Australia. Very simple. तकरीबन 10,000 वर्ड्स का है, एक आपके जेब में आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन. I think that constitution was also referred to at the time of India's constitution जब बना था. American constitution was referred to, ऑस्ट्रेलियन भी हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड का नहीं है, they have common law. So ये बहुत सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें ज्यादा तोड़ मरोड़ करने का नहीं है, you just follow it. तो डेमोक्रेसी, ऑस्ट्रेलियंस they value the democracy. We value our democracy. The independence of our institutions, freedom of expression. कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी, that does not mean madness, you know, but then you have the right to express yourself on social media, on print media, and otherwise also. And our Reserve Bank is very autonomous. For example, in the last 1 year, there have been so many interest rates. तो उससे क्या होता है, मॉर्गेजेस जो हैं वो भी बढ़ रही हैं. तो जो नई गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट, 1 साल से तो काफी प्रेशर डाल रही है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, मॉर्गेजेस बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. अब रिजर्व बैंक क्यों कर रहा है? क्योंकि दे वांट टू डैम्पन द इकोनॉमी, थोड़ा सा नीचे उसको, गर्मी जो है, हीट को थोड़ा सा कम करें, मगर नहीं हो रहा है. एंड कल ही 25 पॉइंट्स they increased. But Reserve Bank is not buckling under the pressure, although the government wants, but it's not. हमारा जो कोर्ट जुडिशरी है काफी इंडिपेंडेंट है, it's very independent. Just 2 days back, a decorated soldier, Afghanistan veteran, a Victoria Cross, which is the highest, so he lost a court case against an investigative journalist जिसने उन पे लिखा था आर्टिकल. तो ये जो सोल्जर है, डेकोरेटेड ऑफिसर, he took him to court for defamation, but yesterday he lost it in the highest court of Australia, which is the High Court of Australia. So it gave a black eye to the Australian army. थोड़ा सा embarrassment तो हो जाता है whole system, but then they had to take it on the chin. तो हमारे जो institutions हैं
वो independent है. On democracy index, we are number 9, joint with Switzerland. It is full democracy. Freedom of expression, we are a full, this is the top tier in terms of democracy, freedom of expression. Happiness index पे हम तकरीबन 12 पे पहुंचे हैं, तो one of the happiest countries. तो ऐसा क्यों है यहाँ पर? We don't see much police here. काफी पुलिस भी नहीं है, दिखती भी नहीं है आपको है. People manage themselves, self policing, which is so it shows the level of the consciousness and the citizenship of ordinary Australians. They don't need to be policed much. तो ये चीज जब देखते हैं, then you take a look around the other countries. For example, I wrote this book, Authority to Democracies. Democracies around the world, for a reason or for several reasons, they are becoming more and more authoritative. आपकी किताब है, उसका कुछ कवर आपके पास अवेलेबल है, दिखा सकते हैं आपके पास? जी हाँ, I could. क्या अभी टेबल पे अवेलेबल है क्या आपके पास? Not on the table. कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, कोई बात. You carry on. क्या किताब का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? Authority to Democracies, Need or Capitalistic Greed. Okay. The first chapter is on the sustainability of the human race. That on one side, we are having threats, the human race, existential threats, like we have due to the growth in the population, human population, which has grown about 8 times in the last 250 years. Sorry. I can show you the book. This is the book. Okay. This is a that's fantastic look. Yeah, authoritative democracies. Yeah. So the first chapter. So on one hand, we have threats which can wipe the human race due to the human growth and our needs, our consumption, and our footprint on the earth, climate change, our contribution, a loss of biodiversity. क्योंकि climate change से हमारा जो footprint है, it's going into the habitats which are not ours, where our fellow living beings live, and they work for us. हम उनको भी खत्म कर रहे हैं. उसके बाद हो गया आपका, we have drinking water problems, we have housing problems, we have a rise of artificial intelligence, which is again a threat if not managed, because it can remove all of us. And then we have rise of the far right. So these are the things on one hand. So you would expect democracies, at least you would expect कि जो leadership है leading democracies में, they will look to those issues so that the human race is saved in time. But on the other hand, you see the leadership is going in a very different direction, very strange direction. So we are losing the time where we could recover and save ourselves from those threats, but it's not happening. So it's going in a very so what is democracy doing? Is it helping us? Is it not helping us? सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं. अब हमें भारत के दर्शकों को बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, कितनी पार्टीज है वहां पे, उनके ओरिएंटेशंस क्या हैं, वो सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जरा थोड़ा सा उनके बारे में बताइए. रूलिंग पार्टी कौन सी है, मेन अपोजिशन पार्टी कौन सी है? हालांकि रूलिंग पार्टी मैं लोगों को बता चुका हूं कि वो लेबर पार्टी है और लिबरल पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है, जिनके पॉलिटिशियन बिल के कौल साहब है, जिनसे हम बात कर रहे हैं. तो थोड़ा डिटेल में बताइए लोगों को वहां का पॉलिटिकल सेटअप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है. जी. There are two main parties. Traditionally, we used to have Labour only. फिर 1950s में फिर Liberal Party came into existence. Libertarian. This was a party supposed to be for people, the forgotten people. Now the difference is Labour was center left, a leftist party. It's more socialist. Okay. And Liberal was more capitalist. It rewards the individual enterprise, family, freedom of expression, libertarian, liberal. Okay, but center right. And it also takes care about the traditional जो conservativeness है हमारे में, humans में. Some people don't want to change. They want to keep it the way they will. So that's a conservativeness, but it's center right. So over the time, we had many parties like Austrian Democrats. They are gone. But
पिछले 10-15 साल में ग्रीन्स आए हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स. They're more left. So they talk about climate change. They say, well, we must get rid of the fossil fuels. We must get rid of the gas khatam karo, fossil fuel khatam karo, coal khatam karo. We only should have the renewable energy. You understand? So usse jo hai fallout काफी खतरनाक हो सकता है. And they talk about those issues. And they have been traditionally supporting the Labour Party. अब उनकी वजह से after 9 years last year liberals lost the government because the greens vote जो है उसकी वजह से labor, because यहाँ पर preferential voting होती है, so you vote 1 2 3 4 and then they, that's ऐसे होता है. It's not only straight 50% आ गया तो और the highest votes आ गए. No, you have to cross 50%. अगर आपके पास 38% आ गए तो आपको 50 आना किसी, so बाकी parties के जो है उनके preference votes आपको आएंगे. How they vote for you, which is real democracy. It's not just you get 38% votes and आपने government बना दिया. नहीं, 38 आपके पास आ गए votes, but that means 62% आपके पास नहीं है. They're not supporting you, and then you claim I'm the popular. So नहीं है. तो हमारे यहाँ तो preferential voting है. बाकी parties का भी होना चाहिए जो votes लोग देते हैं बाकी parties को, उनके preference आ जाते हैं. हाँ जी, if they rate this number 2, number 3, number 4 ऐसे होता जाता है. So the candidate that crosses that 50% line is declared as the winner. So although liberals got more votes than Labour, but because of the preference votes from the Greens, they crossed the line and they made the government after 9 years. अब देखिए क्या हो रहा है. Labour made a lot of promises election के वक्त, और वो promises Greens को भी बताए. अब Labour is doing same thing what Liberals was doing. हमारे कुछ coal mines भी खुल गए हैं तो and Green Party खफा है. ये क्या हो रहा है? Then they patch up, they have discussion, trade off करते हैं, you know, and that's political maneuvering. That's they do. But आम जनता जो है वो देख रहा है. और Australian mindset ऐसा होता है, यहाँ पर tall poppy syndrome है. They will not allow one party to be there all the time. So why we lost the government after 9 years? There were two factors. एक तो हम कोविड से बाहर आ गए थे, प्लस कोविड के दौरान जो हमारा था country, it was closed. Australia was fully closed to the world for 2 years. और हमारा Western Australia was closed for 3 years, एक और साल additional, because हमारा premier, you know, is a federal system. So the state premiers जो हैं, they also have powers. So it's not like the central government is, or the federal you government. are basically a federation of state, not union of state. So exactly, वो American system है mostly ये सारा का सारा. Exactly. So you can't push the state premier. All the states have their own flags. All the premiers, they have constitutions. We have police जो है, law and order, अलग-अलग laws हर जगह हैं. So एक ही नहीं है. And that's how we coexist, all states. So, and that's beauty about it. तो ये anti-incumbency जो था, 9 साल थे, liberal was in power for 9 years, and people get tired. Say नहीं, let's get these people back. इनको देंगे मौका. Although it didn't look very flash on the ground, क्योंकि हमारे government ने, liberal ने, we didn't have much COVID का यहाँ पर इतना footprint नहीं रहा, क्योंकि we were the first country, amongst the first countries who closed the border. But that's not how people reward you. So okay, now you had enough. Now let's get these people. आप इनको देंगे मौका. तो अब labor है. This is how it happens, because लोगों के दिमाग में ही डेमोक्रेसी है कि एक ही को नहीं बिठाना है, इसको भी मौका देना है, इसको भी मौका देना है, so that no one party takes people for granted. दूसरी बात है भाई, यहाँ पर जब जो कहते हैं एबोरिजिनल्स भी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो ब्रिटेन से आए या बाकी देशों से आए हैं, तो वो वाइट आबादी भी काफी है. लेकिन अब माइग्रेंट्स के अंदर जो बाकी जो देशों से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से या एशियन कॉन्टिनेंट से लोग आए, वो भी काफी हैं. वो भी प्रोफेशनल फील्ड में आ रहे हैं और पॉलिटिकल फील्ड में आ रहे हैं. आप मूलतः भारतीय हैं, कश्मीरी हैं, आप राजनीति में आए हैं वहां पर, तो लोग वहां के जो लोकल, आपके जैसे आप पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, तो लोग जब कोई भारतीय आता है राजनीति में या कोई अफ्रीकन आता है, तो उसको कैसे व्यू करते हैं वहां पर? It's all merit based.
देखिए कोई रिजर्वेशन नहीं है. इफ यू आर जहीन है आप एंड यू हैव द acumen, you have the zeal and you can lead, you have the leadership qualities, so the political parties then pick you up, and then you have to go through the pre-selection phase. It is not that you are tapped on the shoulder and then you are a candidate. You had to go through a pre-selection phase, which means that there'll be different candidates fighting for the same seat within the same party, and then they have to convince the electorate, जो भी plebiscite होता है वहां पर, तो वहां पर उनको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं देखिए कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट. सो वहां पर क्वेश्चन आंसर होते हैं. देन यू आर प्री सिलेक्टेड. मैं आपको एक मिसाल देता हूं. There's a 27-year-old girl, Afghani girl. She came here as a refugee when she was about 5-year-old, Afghanistan se. Last year, she was elected to the Senate of Australia. And we have many candidates from the Indian subcontinent. पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में हैं, इंडिया से हैं. And once you are a citizen of Australia, you are an Australian. फिर तो कोई दो चीज नहीं है, एक ही लॉ है. अब देखिए आजकल क्या है, ये लेबर गवर्नमेंट जब हमारा है तो इन्होंने एक वादा किया था, हम करेंगे एक वॉइस, आवाज, वॉइस प्रोग्राम है, उस पे हमारा रेफरेंडम होगा टू गिव द इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया मोर वॉइस. उनमें समस्याएं हैं. देखिए इंडिजिनस पीपल तकरीबन भारतीय जितने हैं 8 लाख, उतने वो कितनी पॉप नहीं, वहां की जो एबोरिजिनल्स है वो कितने हैं वहां पर? वही तकरीबन, हाँ जी, 8 लाख 1 मिलियन के आसपास. हाँ. मगर वो एक ही किस्म के लोग नहीं हैं. अच्छा. वो 30-40 किस्म के लोग हैं, ज्यादा 300. they have their own languages, own cultures. अपनी जबान अलग अलग है, आपके कल्चर्स और बिखरे हुए हैं हर जगह, तो वो एक ही नहीं है. अब इन ये कह रहे हैं कि उनको हम वॉइस देंगे, तो वॉइस का मतलब है कि दे, सो व्हाट डू यू मीन वॉइस? नहीं, दे शुड हैव मोर रिप्रेजेंटेशन. वेल, दे ऑलरेडी हैव, दे आर ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड. हमारे 150 जो मेंबर पार्लियामेंट्स है फेडरल में, तो वहां पर 11 है, तो वो तो ऑलरेडी है, दे आर रिप्रेजेंटेड. नहीं, एबोरिजिनल जो कम्युनिटी, उनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो मगर प्रॉब्लम्स क्यों हैं? प्रॉब्लम्स तो लोकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. हर स्टेट में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. नहीं, उनको हम देंगे, तो दिस इज द आर्गुमेंट. अब व्हाट इट डज, इट हैज रिपरकशंस. इवन द जजेस, जो हमारा लीगल hand experts and they are also divided in this. What does it create? Does it create another tier of government? We are following Westminster system, lower house, upper house. एक और कोई ग्रुप बनाए, उसका नाम द वॉइस है. फिर do we have to go through them? जैसे it takes a lot of time. कोई बिल पास करने के लिए लोअर हाउस में, फिर ऊपर अपर हाउस में जाएगा, वहां पर वो माइक्रोस्कोप लेके पूरा उसको देखते हैं. It takes weeks sometimes to really say whether it's okay or not before passing. Does it have to go to the voice? It means the indigenous जो representation है. फिर क्या होगा? If they say no, then what happens? But this government is saying, well, उनका जो है unbinding रहेगा. मगर unbinding का क्या मतलब होता है? Means आप मेरे को, you are appointing me for something, then you are saying what I say, advise and all that is unbinding. That means you're tricking the people. And is this voice going to fix the problems जो उनकी social problems है? No. So this is liberal party. हमारा ये है कि देखिए, ये तो एक तो ये बंटवारा करता है हमारे देश को. We are dividing people, society here, which is not good. जी, मैं समझा. इस पे मैं आता हूं. अब ऑस्ट्रेलिया का जो एक ओरिएंटेशन है खास तौर से साउथ एशिया के प्रति क्या है, जिसमें भारत भी है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो उनके प्रति क्या रुझान है, और क्या पिछले कुछ सालों में उस रुझान में ऑस्ट्रेलियंस का और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें कोई बदलाव आया? इज देयर एनी पैराडाइम शिफ्ट इन दैट वन टुवर्ड्स इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल? Okay, we're coming to China factor now. See, like India, China is our largest trading partner. Our exports जो है, iron ore जो है, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ,
as a consulting engineer. So हमारे maximum exports जो हैं वो चाइना को जाते हैं. So most of our money comes from China exports. We are a resource based country. जैसे आयरन ओर है, यूरेनियम है, मैग्नीशियम है, गैस है, कोल है, gold है, diamonds. There's lots. So China is an important partner, and we live in Asia, just like India. Similar. आपके यहाँ काफी चाइनीज भी है, चाइनीज पॉपुलेशन काफी है ऑस्ट्रेलिया में. Yes, they are a little bit more than the Indian population. They have been here for a long time, but Indian जो community है, is the fastest growing community in Australia. Indian community is the fastest growing. So Chinese are not only from the mainland China. Chinese can be from Malaysia, they can be from Singapore, they can be from Taiwan, they can be from Hong Kong, from Indonesia. They're coming from various countries, and they also bring the cultures of these countries. They may all look like Chinese, but they're different people from different backgrounds, and also from the mainland. That's so we lay with a lot of emphasis on our neighbors जो हमारे Asia Pacific में है. New Zealand is another country, our closest neighbor. Some people call New Zealand as the seventh Australian state, but it's an independent country. We don't need a visa to go back and forth, but we live like two brothers, you know. जैसे कनाडा और यूएस है वैसे हम भी रहते हैं. आप आपस में जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ मकान खरीद सकते हैं. Everything. Immigration, we don't need a visa. Immigration हमारा जो होता है वो तो जैसे मैं लोकल आ रहा हूँ वैसी है. जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में हम बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं. We need passport, but we had to go through the immigration. But नेपाल के लिए तो हमें पासपोर्ट भी नहीं चाहिए ना, हम जा सकते हैं बिना अपना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं, बाय लैंड बॉर्डर भी क्रॉस कर सकते हैं. जी, it's not even checked there. तो वो अलग रिलेशनशिप है वो. जी हाँ. तो how India is being viewed by the Australia? India is a very important partner as we view it, because if you're following the geopolitics, COVID जब शुरू हुआ था तो हमारा जो liberal government है, Scott Morrison was the prime minister, and so we blame China directly. And we asked for independent investigation into the outbreak of COVID-19. It's one of the first countries. America didn't say it, but Australia said it. That was Scott Morrison, the Liberal government. He said, the United Nations, the world body, must investigate. And the finger was pointed towards China. तो उससे हमारे चाइना के साथ हमारे संबंध थोड़े से rigid हो गए on both sides. Then China stopped buying some commodities from us. Not everything though. But the relationship got a bit frozen. In the meantime, then that gave Australia opportunity to focus more on India. Some people say, well, India could be replacement of China. China के साथ अगर है, मगर China अभी भी हमारा largest trading partner है, and a very strong, formidable country. So you have to be very careful. China एक manufacturing giant है, India manufacturing giant नहीं है. So the way we see India as a market. Manufacturing नहीं है, मगर you import our resources. जो हम China को देंगे, आप दीजिए. And also we want your students. We want Indian students. We want. You understand what I'm saying? So because we are export-oriented country, resources जो हैं, अगर China कल को मान लीजिए बंद कर लेता है कुछ हमसे लेना, तो हम कहाँ किसको बेचेंगे फिर? So we have turned, because of the China thing factor, we have turned more towards India. For free trade agreement हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. जी. So we have turned more towards India, but at the same time, we are also very open to all other countries around India also, and on this side also, South China Sea also, we have Malaysia, Singapore है, Indonesia है. Indonesia के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. Papua New Guinea के साथ we are focusing more on that. It's very important that Australia should have good relationship with all its neighbors. It's very important, because your neighbors are your first line of defense. तो उनमें invest करना चाहिए. It's very important. This is on both sides of politics. We want to improve
the relationship that we have with our neighbors, immediate neighbors जो है, वो पहला डिफेंस है. जी. So that's wisdom. But India is very important for us, and we want a. Or there is one more thing which aligns us with India. That is India's democracy. It's normal. Like you have China's socialistic communist system, jo hai, but it's growing power. But on this side, we look at India. Okay, this is a democracy. But then there are other questions are being also raised. सस्पिशन क्या है इंडिया के बारे में? इंडिया में बहुत बातें उठती हैं, डेमोक्रेटिक जो हमारे क्वेश्चंस हैं बहुत डाउन है, इंडेक्सेस में हम बहुत डाउन हैं, प्रेस फ्रीडम में हम डाउन हैं, हंगर इंडेक्स में हम डाउन हैं. और पीछे मोदी जी का विजिट हुआ तो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई मोदी के बारे में जो इंडिया में बैंड है, प्लस वहां के कुछ यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को भी बैन किया है. खालिस्तान के स्लोगन्स भी टेम्पल्स पे लिखे जाते हैं. तो कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पे, चर्निंग है वहां पे राइट विंग का. स्टूडेंट्स का इसलिए हुआ है, ये 5 स्टेट्स में या 6 स्टेट्स में हुआ है. दे हैव फाउंड 1 in 4 एवरेज एप्लीकेशंस जो है स्पूरियस है, फेक एप्लीकेशंस, मींस ऑथेंटिक स्टूडेंट नहीं है. सो दैट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क कि इन स्टेट्स में से 25% इज अ लॉट कि जेन्युइन एप्लीकेशंस नहीं है. स्टॉप इट. That's about the students, not that we don't want to take Indian students or Indian citizens. It's because of the problem with those applications, not genuine students coming in. Yes, Australia is very aware. As I said, we are in the top tier of democracy, and we value our democracy. We value freedom of expression. ये सब चीजें हैं, and at the same time, we are keeping a close eye on other countries. जैसे चाइना फैक्टर है. चाइना और हम में क्या फर्क है? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया डेमोक्रेसी है. सो इंडिया के साथ अलाइनमेंट नेचुरल हो जाता है. मगर अगर इंडिया के डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस उठते हैं, then some people may view it, what's the difference between the two? Why, if India is becoming more like China, so what's the difference? So why should we differentiate? Why shouldn't we improve relationship more with China? So it's a very complex thing, because we value India's democracy, and it's very important that India is seen to be a free democracy, as Australia is. We are a free democracy, a full democracy. So इंडिया में जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है, काफी रिपोर्ट्स आते हैं, और एंड द वर्ल्ड कीप्स एन आई. ये क्या है? ये दिस अ ग्लोबल वर्ल्ड. Even if you may try to keep things away from the eyes of other people, you are being watched. Everyone is watching everyone else. जो embassies होती हैं, high commissions होते हैं, उनका काम वही होता है, to keep an eye. So nothing remains hidden, चाहे कहीं पर भी हो. अब डिप्लोमेसी के लिए तो कुछ भी बोला जाता है, पर करा कुछ हो जाता है, because of there are other interests. Material interests होते हैं, geostrategic interests होते हैं. अब because of India's democracy, it aligns us with India in terms of geostrategy. Just South China Sea है, अभी यूक्रेन में था, India chose to be a neutral, and that also raised questions यहाँ पर हमारे local में कि why India. So India has its own reasons, compulsions, I would say, to choose between Ukraine or Russia and all that. There is history. So the world must not expect much from India in that respect. India has to look after its own interests. And historical जो alliances हैं, उनको तोड़ना बेवकूफ़ी है. Your friend who that has stood by you through thick and thin, you don't want a discarded friend. It's very important. Yes, you can have more new friends, which is wisdom. Have better relationship with others, but not to remove one with replace one with the other. So we have understood. पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम प्रोग्राम के लास्ट 10 मिनट्स के सेगमेंट में, then we'll be winding it up due to the time compulsions, कि मनमोहन सिंह ने 10 साल का रूल किया. अब ऑलमोस्ट 10वें साल के अंदर मोदी जी भी आ गए हैं. तो क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई न्यूज बनती है इसके ऊपर, हाउ दे व्यू दीज टू रिजीम्स, मनमोहन सिंह रिजीम एंड मोदी रिजीम, इंडियन डायस्पोरा को छोड़ के? मतलब वो तो ठीक है, उनका एक अलग ओरिएंटेशन रहता ही है वहां पर. जो वहां के ऑस्ट्रेलियन मूल के निवासी हैं, वो किस ढंग से व्यू करते हैं उसको? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, he is a noted economist. So unka to credentials, so he doesn't have to prove. The Indian economy, how it improved during his time, he wouldn't speak much,
though. That was the only thing where he wouldn't speak much. But then he's highly respected in the West, in England, in Australia, and his input. Um, and ऑस्ट्रेलिया हैज बीन व्यूइंग पिछले ये सालों में डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था एंड अगेन रिसेंटली सो आईब्रोज आर रेज्ड हमारा जो मैक्सिमम है $100 का होता वो हमारा उससे ज्यादा नहीं है तो पहले ये क्यों आया फिर ये क्यों हुआ यू नो people get a bit jittery about it कि that shows instability in the currency तो क्या हो रहा है और उसके बाद minorities के साथ as I said, all countries keep an eye on other countries, every other country. That's what the politics all about. Joe, the stories coming about minorities are also not hidden to the world, and that causes concerns. And then associated उसके साथ फिर बाकी चीजें भी आती हैं. So whatever is happening in India, it comes out. Nothing is hidden. And those things do raise eyebrows and also concerns. But because we need India, let me be very, very straight and honest about it. We need India for geostrategy and as a market. So those things may be overlooked by any government in Australia. लेकिन भारत में जो हिंदू रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, हार्डकोरनेस बढ़ रही है यहाँ पर हिंदुत्व के नाम पर, जहां पर जैसे बीजेपी जो मेन रूलिंग पार्टी है वो मुस्लिम्स को टिकट नहीं देती, चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबलीज के अंदर हो, तो उनको पूरा आइसोलेट कर देते. 15% की पॉपुलेशन है, दे डोंट गिव देम टिकट्स. एक्चुअली सिखों को भी टिकट नहीं देते, पंजाब को छोड़ दो कहीं पे, क्रिश्चियंस को भी टिकट नहीं देते. तो एंटायर माइनॉरिटी जो 25-30 करोड़ की इंडिया में है, 140 करोड़ में, उनको टिकट्स नहीं मिलते हैं, तो उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया जाता है. क्या ये खबरें भी वहां पहुंचती हैं? ये खबरें भी पहुंचती हैं because this all this is captured in that dwindling जो है democracy index है, freedom of expression है, ये सब उसी में आ जाता है. What's happening with minorities? Hindutva, yes, is already known to Australian politicians and the right wing, rise of right wing. But having said that, not all Hindus are right wingers. देखिए ये चीजें भी है ना. तो अब जैसे the present government in India, कर्नाटक में, हिमाचल में राइट विंग बुरी तरह से हारा है. It's a very, very bad defeat for them. So this is health in Indian democracy, which is cherished. We notice that. See how Indians are trying to reverse if they have gone in some direction. Coming back to that democracy, the Indians love democracy. The trend shows that Indians love their democracy. And ये पिछले सालों में क्या हो रहा है? See, 31% जो है इस गवर्नमेंट का आया था वोट, then it rose to about 37%. That means 63% didn't vote for this party in 2019 India BJP. So about 63% did not vote. Cumulative vote about 37% here, 37-38%. तो overwhelming majority जो नहीं किया है. तो अब ये 37% है, let's assume they are all Hindus. But sir, सभी नहीं है Hindus. 37% थोड़ी ना है. Hindus are much more than that. That means all Hindus are not with this. So we had to be very careful not to brand all Hindus. I mean, most of my friends are Democrats through and through. They believe in oneness, insan, so it's not that it's all Hindus are. एक क्वेश्चन आता है सर, बहुत सब एक क्वेश्चन आता है. मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे और तभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलियन संसद में दिखाई जाती है. मकसद क्या था? क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर जो मैसेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट यू बट वी आल्सो व्यू दिस वन आल्सो. इसका मकसद क्या था? If you go back a bit, जैसे अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी आए थे. तो उसी दौरान जो यहाँ वहां पर शो हुआ था स्टेडियम के अंदर, एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी was called out. He was called out by the Indian government for attacks on the Indian temples in Australia. You remember that? उसी वक्त हुआ था. जी. And he just gave a smile. He said, we'll look at it and all that. So diplomatically, this is tit for tat. So if you call me out in my country... So diplomatically, this is tit for tat, showing that documentary in the Parliament of Australia. Of course.
I mean, diplomacy is what you do to me, I'll do to you in a different manner. Arm twisting तो यू होती है मीन टू से जैसे कि अभी मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, उनका स्टेट विजिट है ये, स्टेट ऑनर मिल रहा है उनको, लेकिन उससे पहले इंडिया के ऊपर जो रिलीजियस रिपोर्ट है अमेरिकन वो ऑलरेडी रिलीज क्या हुआ कहते है। हैं विदेश मंत्रालय की, जी हाँ। जो एंथनी ब्लिंकन ने रिलीज की है ऑफिशियली नाउ, इट्स ए काइंड ऑफ ए कि हम आपका स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको ओवरलुक नहीं कर रहे जो आप वहां पे कर रहे हैं, इसका मतलब। Exactly, because the governments are responsible for their own country, they are accountable for their own people. अब देखिए, democratic countries है, America's democracy, India's democracy, Australia's democracy. The Australian politicians are accountable to people who believe in democracy. Now, if you turn a blind eye to something like this, that means the people ask you this question: what are you guys trying to do? Are you overlooking this? Don't you believe in democracy? So you will lose. So so what is happening in India has bearing on the democracies around the world. And people love their democracies. They will defend their democracies. So that puts pressure back on India then. So you can't remain an isolated country कि मैं जो कुछ करूंगा तो वो तो कोई देखेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो डेमोक्रेसी हमारे लोगों पे, हम पे प्रेशर पड़ता है, लोग हमसे सवाल पूछेंगे, and if we are not able to convince them, then there's a problem. The same is the American people. They will ask their government. आखिरी सवाल, how the common politician, Liberal Party or Greens or so-called Labour Party, since you are political person also, how you people view the regime of Modi government as an individual or as a government? We see more as India. हम जैसे यहाँ पर we don't follow the presidential form of government, you know, or the populism and all that. वो यहाँ पर मोदी सरकार को आप कैसे देखते हैं? हम मोदी सरकार को इंडिया के इसके विंडो में देखेंगे. We see India. Where is India going? It's not one person. Where is India going? Is India becoming more authoritarian or India is becoming less authoritarian? Because तो वहां से क्या पिक्चर क्या इमर्ज हो रही है? इंडिया ज्यादा अथॉरिटेरियन हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes. I should be I should be very frank and honest with you. That is the common, not only politicians impression, it is the knowledge. Politicians know about it, but it's also the common people's knowledge that yes, this is happening in India. Okay. दर्शक मित्रों, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिन पर मैं बिल कौल साहब से बात करना चाहता हूं, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन मैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर से मैं बिल कौल साहब को अपने चैनल पर आमंत्रित करूंगा, इनवाइट करूंगा, ताकि बहुत सारे और विषयों के ऊपर जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, या फिर बहुत सारे और जो डोमेन्स हैं उनके ऊपर मैं उनसे डेफिनेटली बात करूंगा। और खास तौर से मैं बात करूंगा उनकी जो बुक है, खास तौर से डेमोक्रेसी के ऊपर जो बुक आई है उनकी, अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के ऊपर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और फिर से उनको बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे आपके चैनल पे, ताकि ऑस्ट्रेलियन व्यू पॉइंट अबाउट इंडिया जो है और ए व्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया आप तक पहुंच पाए। मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बिल्कुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमारे चैनल पे आए। जल्दी आपको फिर से हम आमंत्रित करने जा रहे हैं ताकि कुछ और आपके साथ गुफ्तगू की जा सके। शुक्रिया आपका बहुत बहुत टाइम देने के लिए। नमस्कार दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।